गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू MatSciOdia मु तमनकर संबित सर जे तमन को स्वागत करूची आजिर जूलॉजी क्लास में। आजिर क्लास रे आमे माने डिस्कशंस करबा स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म रो स्ट्रक्चर ऊपर काहे कि ना मु तमन को पूर्व क्लास रे स्पर्म रो फॉर्मेशन ऊपर डिस्कशंस करैतिली केमिति ताहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रे फॉर्मेशंस होउची ताको किए नरिशमेंट करौची एवं तार आमे माने स्पर्माटिड रु केमति मैच्योर स्पर्म रो फॉर्मेशन होउची ता ऊपर मध्ये आमे माने डिस्कशंस करथिले। आज रो क्लास टी बहुत इंटरेस्टिंग हबो एवं तमे माने किछि नुवा जिंस सिखिबाकू पाइबो। तो बिना कोनोसी देरी न करी आमे माने स्टार्ट करिबा हमर क्लास एवं तमे माने वीडियो को प्रथम रूप से जाई देखो एवं निज पेन आउ पेपर रे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट आउट करो। तो ठीक अछि पिले स्टार्ट करिबा हमर क्लास टी। तो आज क्लास रे आमर जो रोहुची दैट इज कोन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो प्रथमे मु तम मानकू स्पर्म रो स्ट्रक्चर ता बनेबा सिखै दउची। देखो जदि स्ट्रक्चर वाला किछि क्वेश्चन आसुची ना तम मानकू मन रखियो गोटे जिंस स्ट्रक्चर वाला किछि क्वेश्चन से पचारुची तो डायग्राम ता मस्ट जहां भी तमे माने सेठी ये करि पार। जदि स्ट्रक्चर पचारुची जानिबो डायग्राम ता होउची मस्ट बिना डायग्राम रे तमे माने किछि करि परिबो टाइ डायग्राम टी करिया। तमे माने मध्ये 10th रे करिथिबो समस्ते शुक्राणु रो चित्र रे करथिबो समस्ते। देखिबा ए सब जिंस कोन तमे माने जानिथिबो स्पर्म रे माइटोकॉन्ड्रिया रहिबार कारण मध्ये भी रहिଛି काना स्पर्म जेतु फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन धेर मूव करूची एवं पूरा ओवम पर्यंत जाउची तमरो फर्टिलाइजेशन करिया पई तो माइटोकॉन्ड्रिया र आवश्यकता मध्ये रहिଛି सेठी ହେଲା। आउर तमे माने जानिଛ जदि हम कोनोसी गोटे जने गोटे कोनोसी गोटे बेबी को तमे माने कंसीडर करिकि नै जाओ त माने मन रखिबो से बेबी धिरे ता मार ही माइटोकॉन्ड्रिया टा ही थाए काहे ना ओवम धिरे जो माइटोकॉन्ड्रिया टा थाए सेटा आइदर से पुओ हो बा झियो हो सेटा ता मार बापा थ्रु केवल खाली न्यूक्लियस टा ही जीव आ कोनोसी सेल ऑर्गेनाइज तमे पाइबो ओनली न्यूक्लियस टा जीव एन क्रोमोसोम गुडी कहि जीवे बुझी पाछी आ सेठू तमरो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया पई कोन सब तमरो ये से सब दिन सब मिली जो मिसा मिसई खाती जो किंतु यदि ओवम रो भीतर देखिया हमें माने मां कर पाखा पाखी से मैटरनल इफेक्ट माने भारी करे माने मां कतरे जो कैरेक्टर थियो सेटा पिला कदी आसीबो बापा को बहुत रेयर एटा गारा पकेबा एमती सीधा गारा स्ट्रेट लाइन टे एबे ए पार्ट गुड सब तमे माने दर्शेई है ना।
एटा फास्ट टा कोन पले दैट इज एक्रोसोम एक्रो एटा कोन न्यूक्लियस एटा कोन पले प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एटा कोन पले डिस्टल सेंट्रियोल देन तापर असला कोन पले माइटोकॉन्ड्रिया ये आछि पले एक्सियल फिलामेंट एंड पीस ये तुम मैंने लिखि परिबे तळे कोन पिले सब बेले कुए जहां भी तुम मैंने डायग्राम बनौछ से डायग्राम रो सब बेले तळे मेंशन करियो तुम डायग्राम ता कोन बनौछ कोन लिखि परियो तुमने स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल ए लिखो स्मॉल ए लिखो जो उतरे लिखि लिखो स्ट्रक्चर ऑफ समस्त को रेफर करिवे तो तुम मैंने कैपिटल ए लिखिया को ट्राई करियो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म माने स्पर्म की मैच्योर ए साइज माने ये एबे फर्टिलाइजेशन पाई तमरो कैपेसिटी अछि आमे हैला तो एबे आमे आर पार्ट गुडी को ऊपर डिस्कशन करिबा डायग्राम जे तमरो क्वेश्चन आसला स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ऊपर लिखिया पे डायग्राम टी बनै दबो एवं तापर तार स्ट्रक्चर ऊपर डिस्कशन करिवो कोन लिखि परिबो तुम माने राशि बो एमति किछि a typical sperm is small thread like motile cell बुझिपाल small thread like motile cell it has four parts अरा चारिटा पार्ट अछि it has four parts बुझिपाल such as eye head second eye hela neck third eye hela middle piece and eye भी हला tail तो ए चारोटी पार्ट को नेगी कोन हे जे ना स्पर्म टी तयारी हेची तो एबे हेड ऊपर देखिबा हेड कोन कहूची हेड हला इट कंटेन्स एते लिखि परिबो तुम माने it contains haploid nucleus पूरा सिंपल दिन सर के ही तुम मानो केते कॉम्प्लिकेट करिया को कोइ कहूना the protoplasm bulges forming a chromosome made of Golgi bodies माने Golgi bodies द्वारा स्पॉट रो प्रोटोप्लाज्म दिहरे गोटे स्पेशल टाइप माने कोन जिनसटे तयारी हबो जार ना हले एक्रोसोम आ एक्रोसोम रो काम हले कोन जानि जते बेले तमर पले फर्टिलाइजेशन हबो माने स्पर्म भी जते बेले जाईकी ओवम रो कोन जो मेम्ब्रेन हार्ड मेम्ब्रेन अछि त तुम स्ट्रक्चर पढिबो तले मेम्ब्रेन ना हार्ड मेम्ब्रेन बिषय आमे माने जाने तर पार्ट सब कोन कोन हैला तो ये कोन करे गोटे पेनिट्रेशन कोन टी फॉर्मेशन करेबो ए जो एक्रोसोम दिहरे जो सब एंजाइम थिबे एटा रप्चर हबो हैला रप्चर एटा लागियो फास्ट ए एंजाइम माने जिबे ए तार जो वाल टा केन खाई जिबे डाइजेस्ट करिए हैला एवं गोटे कोन टे तयारी हबो एक्रोसोम द्वारा एवं तापर न्यूक्लियस टा ए कोन वाटा देकी भितर को पसिबो आगु कहजे पेनिट्रेशन कोन बा पेनिट्रेशन कोर बोली भी तमे माने आकु धरि नै जाओ बुझছো even next क्लास, that is neck.
second eye hela neck. It is the constricted region present between head and middle piece. It is the छोट जगह constricted गुजिया भलिया middle piece. It contains a proximal centriole towards head माने मुंडो आड़ को जो सेंट्रियोल टा था ना हला proximal centrioles head and a distal centriole towards को रही है मिडिल पीस और जोटा मिडिल पीस आड़ को रही है सेटा तमर हला कोन डिस्टल सिंपल जिंस एति किला नेक विषय आ जो सेंट्रियोल मानकर काम मु तुम मान को बुझे देमी कोडी जानि फर्टिलाइजेशन सब ए तमे माने जानि छ सेंट्रियोल रो मेन काम हला कोन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करिबारे सहाय्य करिते तो एमानकर कोन को प्रकार काम रहइबो ताकू मध्ये हमें माने देखिबा देन ता प्रासला पिले मिडिल पीस it contains many spirally arranged mitochondria it is converted by sheath sorry converted no covered ये गोटे कवर द्वारा कौन होता है बोले कवरेड बाय sheath गोटे sheath द्वारा ये कवर होता है कन्वर्टेड भूल कहि देली बोले कवरेड बुझी पहले तो देन तापर आसिला टेल टी नो टी आई एल टेल it consists of an axial filament enclosed in protoplasmic sheath माने एतरे गोटे एक्सियल फिलामेंट रही थाए आ ये तमरो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ द्वारा कवर हेकी रही थाए द लास्ट पार्ट ऑफ टेल is not enclosed in sheath is called end piece तो तमे कोन कहि परिबा तमे कहि परिबा end piece बोली कहि परिबा कोन कहि परिबा end piece बोली कहि परिबा हैला अच्छा आउ एटी तापर से ता नेक्स्ट पॉइंट से ता मूवमेंट कथा कहि स्पर्म रो मूवमेंट केमति द स्पर्म मूव by ondulating बुझे देमी केमती ondulating टाइप का movement with the tail ए भले
एटा स्पॉन रहिला एमती से मूव करिवो बुझि पाइलो ए टाइप रो मूवमेंट तुम माने देखिया को पाइबो ए प्रकार कंडीशन को कुआ जाउची कोन पिले ना ऑन्डुलेटिंग टाइप रो मूवमेंट बुझि पाइला ना नहीं ए टाइप रो मूवमेंट तुम माने देखिया को पाइबो जाको हम कहउची कोन ना ऑन्डुलेटिंग टाइप रो मूवमेंट बुझि पाइला ओके तो आज तो एति पिले मैं आशा कर तुम मान आज क्लास टी बहुत भल लगी आम मैंने नेक्स्ट क्लास रे जेनेसिस ऊपर डिस्कशंस करवा तो से पर्यंत समस्त धन्यवाद समस्ते भलरे रुह आउ समस्त को बेस्ट ऑफ लक तुम मानकर एग्जाम रो प्रिपरेशंस थैंक यू पिले आ मो आडू बहुत चेष्टा करी तुम मानक जुलोजी रो ये सब इंपोर्टेंट टॉपिक्स इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कशंस करिया पई जहाँकि तुम मानकर एग्जाम प्रिपरेशन बहुत साहाय्य करिवो तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे देखा से पर्यंत समस्त धन्यवाद समस्त भल रुह और समस्त को बेस्ट ऑफ लक थैंक यू पिले थैंक यू सो मच।